डी की वैल्यू 6 आ रही है और ए कितना आ रहा है? अगर डी 6 आएगा तो ए मेरे ख्याल से -15 आना चाहिए। And then you can easily find the sum of the first 15 terms. Erad, can you confirm the values of A and D? Okay, you can easily find the sum of the first 15 terms. Now please mark your homework. Question 3, part AB. Question number 8. नहीं करना है आपको, 9 और 10 करना है। उसके बाद क्वेश्चन 12 पार्ट ए बी, and question 14, 15, 16, 17. 14, 15, 16, 17. That's it for today. Allah Hafiz. सर पहला क्या क्वेश्चन था? सॉरी, क्या कह रहे हो जवाब? पहला 3, ओके 3 यस, 3AB पहला था।